Hello students, today we will start solution of quadratic equation by completing the square. Okay. In my last video we discussed हमने निकाला था बेटा उसकी फैक्टराइजेशन मेथड. So today by completing the square solution फाइंड करना by completing the square. इसका मेथड क्या है बेटा? फर्स्ट लेट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है. ओके. स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, सो डिवाइड बाय ए. बेटा कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले. स्टेप सेकंड ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो कितना है बेटा? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया बेटा. ये कितना आ गया बेटा? देखो बी स्क्वायर एलसीएम लेना बेटा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. ओके. सो मेरे पास क्या आ गया? x प्लस बी अपॉन ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. बेटा इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये यूज होगा बेटा. सो x प्लस हमारे पास इस तरफ शिफ्ट करें 2 वैल्यूज आ जाएंगे, हमें 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास. सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है बेटा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6. फाइंड रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो स्टेप फर्स्ट क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 9. कांस्टेंट टर्म राइट साइड. x स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल टू माइनस 2/3. कितना ऐड करना है बेटा? बोथ साइड. हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर 25/36. ओके. x स्क्वायर माइनस 5/3x 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 25/36. x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. एलसीएम बेटा 36. ओके. माइनस 24 प्लस 25 1/36. सो x माइनस 5/6 प्लस माइनस 1/6 5/6 plus minus taking positive sign 4/6 sorry 6/6 taking negative sign 4/6 1 and 2/3. Okay. Second example number 2 5x square minus 6x minus 2. Okay. So beta we find x square first divide by 5. Okay. Constant term right side. Then half of the coefficient of x the whole square. Okay. 3/5 9/25. 2/5 9/25. x minus 3/5 the whole square. Okay. Equal to 25. 10 plus 9 19/25. Okay. So we get x minus 3/5 plus minus root 19/5. 3 plus minus root 19/5. Take positive sign and negative sign. Next है बेटा थर्ड 4x square plus 3x
plus 5. Okay. So divide by 4 first. X square plus 3 by 4x plus half of the coefficient of x the whole square. 9 by 64. 5 minus 5 by 4 plus 9 by 64. Okay. X plus 3 by 8 the whole square equal to 64 minus 40 plus 9 minus 31 by 60, which are not possible because left hand side positive, right hand side negative, which are not possible. So no real root. Next beta fourth. 4x square plus 4bx minus a square minus b square equal to 0. So first we divide by 4. A square minus b square upon 4. Beta complete square. Half of the coefficient of x the whole square. A square by 4 minus b square by 4 b square by 4. So x plus b by 2 the whole square a square by 4. क्या वैल्यू आ गई बेटा? Plus minus a by 2. So we get 2 positive. So 2 real roots. B plus a by 2. B minus a by 2. Next है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4. X square minus root 3 plus 1x plus root 3 equal to 0 by completing the whole square. सो बेटा x का कोएफिशिएंट पहले ही कौन है? सो कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले कितना ऐड करना है बेटा? हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 by 2 द होल स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 by 2 द होल स्क्वायर. ओके. So x minus root 3 plus 1 by 2 the whole square is equal to minus root 3 the square plus 1 plus 2 root 3 upon 4. So we get root 3 the square plus 1 minus 4 plus 2. So minus 2 root 3 by 4. So we write root 3 minus 1 the whole square upon 2. 4 so 2 the square. So we get taking square root plus minus root 3 minus 1 by 2. So first taking positive sign. 1 cancel root 3. Okay. Next taking negative sign. 1. So इसके रूट क्या आ रहा है बेटा? x की वैल्यू रूट 3 एंड x की वैल्यू 1. बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बाय डिस्क्रिमिनेंट. हम कैसे डिस्क्रिमिनेंट से ये बता सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में रूट नहीं आया, रियल रूट नहीं आ रहा था, तो भाई किसी में रूट्स आ रहे थे, तो डिस्क्रिमिनेंट से क्लियर हो जाएगा बेटा किसके रियल रूट्स हैं, किसके रियल रूट्स नहीं है. 1 रूट है, 2 रूट्स है, रैशनल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं. सो थैंक यू वेरी मच.